Hello everyone, today we will discuss regarding the heme catabolism. So each heme molecule consists of one protoporphyrin ring. This is protoporphyrin ring, or when iron is attached at the center of this ring, and the catabolism means breakdown of the substances which will release the energy. सो हीम की फॉर्मेशन सिंथेसिस कैसे होती है, डिग्रेडेशन कैसे होती है, वी विल स्टडी ऑल वन बाय वन. तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 chains of the globin. So hemoglobin is a red blood pigment which is mainly found in the RBCs. तो hemoglobin molecule क्या है, एक conjugated protein है. conjugated protein मतलब जिसमें क्या होगा, combination होगा, bond होगा. तो in this there will be the combination of the protein and the non-protein part. protein form में globin is present, जो ये globin chains है, they are in the protein form, and non-protein form में heme is present. So protein part की बात करें तो globin 4 polypeptide chains से बना होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट की बात करें तो हीम ग्रुप containing the ferrous iron. So as shown in this figure, these are the 4 globin chain, 1, 2 beta and 2 alpha chains. These are the protein part, and in the middle of the protein part there will be the heme molecule. हीम मॉलिक्यूल जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो रिंग होगी दैट इज प्रोटोपोर्फायरिन 9 रिंग होती है, और जब इसके सेंटर में आयरन अटैच होगा देन इट इज कॉल्ड एज हीम मॉलिक्यूल, and the oxygen will attach here on this heme molecule. So next is the function of the hemoglobin molecule. As we all know, it help in the delivery of the oxygen. The oxygen will bind on the heme molecule and from the lungs toward the tissue, and tissue में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, तो it also help in the transportation of the carbon dioxide from the tissue toward the lung, and then it is exhaled through the lungs during expiration. और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है दैट इज aided with the oxygen binding globular proteins, that is myoglobin or heme protein. So we will study these. Myoglobin, that is the globin chain, it comprises of 4 globin chain. जो hemoglobin molecule है it is composed of 4 globin chain. तो जो myoglobin है it is a single chain. जब 4 chains बनेंगी they will form the hemoglobin molecules. As shown in this is a single globin chain, and when 4 globin chain combines then it help in the formation of the hemoglobin molecule. जो hemoglobin molecule है that will form within the red blood cells, और constantly जो एक लाइफ स्पैन है RBCs का 120 days, उसके बाद it will break down and further recycled. तो अगर वेट की बात करें तो इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट 16,000 डेल्टोन्स, और जो हमने पढ़ा कि एक प्रोटीन पार्ट होगा एंड सेकंड वन इज द नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज अ हीम पार्ट. और ये जो स्ट्रक्चर है हीमोप्रोटीन का दैट इज टेट्रामेरिक एलोस्टेरिक प्रोटीन. टेट्रामेरिक मीन्स मेड अप ऑफ 4 प्रोटीन चेन्स, और एलोस्टेरिक मीन्स बाइंडिंग एट वन साइड अफेक्ट फंक्शन एट द अनदर साइड. जैसे कि क्या है कि अगर एक चेन पे, ग्लोबिन चेन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है तो इट विल इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑन द अदर साइड. जो और 3 साइड्स बच गई उनमें ऑक्सीजन बाइंडिंग की कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो इट इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द 4 लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरली. देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द RBCs. So hemoglobin molecule is present in the RBC. This is the hemoglobin molecule. Hemoglobin molecule consists of the 4 chain, 2 alpha and 2 beta chains. So each chain comprises of the heme molecule. heme molecule किसको बोलेंगे, जिसमें एक प्रोटोपोर्फायरिन रिंग प्रेजेंट होगी और उस रिंग में सेंटर में आयरन अटैच होगा, और यहीं पे ऑक्सीजन अटैचमेंट में ये हेल्प करेगा. देन जो ग्लोबिन है it comprises of 2 alpha and 2 beta chains. So it can be written as the HBA alpha 2 and beta 2. So each alpha chain comprises of 141 amino acid, और अगर बीटा चेन की बात करें तो it will comprises of 146 amino acid. So HBA means adult hemoglobin 1. तो इसमें जो टोटल अमीनो एसिड हैं दे आर 574, बिकॉज 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 141 एंड
2 से ही 2 बीटा चेन है, तो बीटा चेन में जो टोटल अमीनो एसिड्स हैं दे आर 146, तो टोटल इज द 574 अमीनो एसिड आर देयर। देन जो हीम मॉलिक्यूल है वो तो था ग्लोबिन चेन का, कि ये जो ग्लोबिन चेन है उसमें इतने अमीनो एसिड से वो बनी होती है। अब अगर हीम की बात करें तो हीम कंटेन्स द प्रोटोपोफायरिन रिंग दैट इज 9, this is 9 ring, and one ferrous iron that is in the form of Fe2 positive, it is present in the center of this ring, जो ये center है that is the Fe2 positive. Then thus one hemoglobin molecule has 4 heme groups and it will carry 4 oxygen molecules. Then this is the structure of the hemoglobin molecule. Here it is formed from heme molecule and the globin molecule. The heme molecule comprises of protoporphyrin 9 and the iron molecule in the form of Fe2 positive. This is the protoporphyrin ring. So it will consist of pyrrole ring 4. This is the pyrrole ring as shown in this figure 1, 2, 3 and 4. These are 4 pyrrole rings and 4 methyl. Here it is methyl 1, 2, 3 and this is 4. Then 2 propionyl 1 and 2 propionyl group and 2 vinyl group. These are 2 vinyl group 1 and 2. So this is complete structure of the protoporphyrin ring 9. And when the iron molecule will attach in the center of this molecule, it is called as the heme molecule. Then other form of the hemoglobin जो maximum quantity में present होती है that is the adult hemoglobin which can be written as the HbA1 and it is present in the majority 97% cases में यही hemoglobin present होती है and it contain 2 alpha and 2 beta chains. And in adults fraction hemoglobin is present which is in the form of HbA2 and it is 2%. It contain 2 alpha and 2 delta chains. And next is the fetal hemoglobin which can be written as the hemoglobin F and it is very low quantity and it is about 1%. It contains 2 alpha and 2 gamma chains. So this fetal hemoglobin will help the fetus to obtain oxygen from the maternal blood during the pregnancy. जैसे बच्चा जब warm में होता है तो this fetal hemoglobin help in the transportation of the oxygen. Then next one is the glycated hemoglobin which is written as the HbA1c and it is found in very low concentration. जो ये HbA1c है ये रिफ्लेक्ट करता है एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 to 3 मंथ, क्योंकि जो एक लाइफ स्पैन है आरबीसीज का दैट इज 120 days. So if there will be any increase in the blood glucose level during past 120 days then it can be checked through the HbA1c test. Then the normal concentration of the hemoglobin in male, it is present in 14 to 16 gram percentage concentration. और अगर फीमेल की बात करें तो 13 to 15 ग्राम्स. दैन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे. जो HbA1 है दैट इज़ 97%, HbA2 इज़ 2% एंड फिटल हीमोग्लोबिन इज़ 1%. एंड जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है इट्स नॉर्मल वैल्यू इज़ लेस देन 5% इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट. देन आयरन मस्ट बी इन द फेरस स्टेट. जो मैंने आपको बताया कि प्रोटोपोफायरिन रिंग 9 में जो आयरन होगा that is present in the center and this iron will bind with the oxygen to form the oxyhemoglobin. Ferric state जो Fe3 positive state है that can't carry oxygen and it will form the methemoglobin. So next is the function of the hemoglobin. It helps in the transport of oxygen from the lungs toward the tissue and it also helps in the transportation of carbon dioxide from the tissue toward the lungs and then it is exhaled through the lungs during expiration and it also helps in the maintenance of acid base balance. So this maintenance we already studied in our previous video. If you want to study, you can refer the previous videos. Thank you.